The topic for the day is internal reconstruction of the company. Now, what is internal reconstruction about? Internal reconstruction is an arrangement made by the company within the company. What happens is, if the company is incurring losses for a span of time and it has landed up in a financial crisis, then what to do? What should be done in case the company has accumulated losses not in 1 year, say in a period of 4 to 5 years, and at present it is in financial crisis. So we come across an arrangement which is made by the company to save it of the losses. If the company goes in the losses, as I just discussed, no one will be interested to invest in your company. Obviously, why will somebody come in? Why will somebody come in with the money if you are in losses? No shareholders will be interested to purchase your shares, neither the debenture holders also. They would also not come forward, and the existing debenture holders, they would be at a high risk, right? Now what to do next? In that case, what another option is the liquidation of the company, right? So if we say no to the liquidation and we don't want to wind up the company, we do internal reconstruction. This is done with the mutual consent of the shareholders and the debenture holders. ऐसे में क्या होगा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है और अगर हम उसका लिक्विडेशन या वाइंड अप करने की सोचेंगे, तो इन दोनों के साथ साथ एक तीसरा होता है क्रेडिटर्स. They will not get anything. They won't get anything. So with their mutual consent, we come across a statement that let us internally reconstruct the company. उससे क्या होगा, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा, otherwise so they will not get anything if the company goes into liquidation. So these three people also agree to this internal reconstruction. Otherwise so each stakeholder may or may not get anything if the further losses get occurred. Now in this case they have this confidence कि चलो we will get something. So this comes internal reconstruction. What happens is, the company makes this arrangement to come over to write off the accumulated losses so that this stake is there. They have the faith that they will get something. No doubt their liabilities will be altered. The company's liabilities will be altered, but इनको कुछ मिलेगा, तो इसलिए इनको तसल्ली रहती है कि चलिए. होता क्यों है ये इतने सारे accumulated losses? In that case, firstly, over valuation of assets जो हैं, we have shown it in the balance sheet. Over valuation of assets. Supposingly you have created goodwill to the extent of 2 lakh rupees, right? सामान आपका बिक नहीं रहा, कोई भी आपके बिज़नेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपका बिज़नेस आगे फ्लरिश हो नहीं रहा, तो ये जो गुडविल आपने 2 लाख रुपए की दिखाई हुई है, दिस इज़ ऑफ नो यूज़. सिमिलरली इज़ द केस ऑफ मशीनरी. मे बी यू हैव शोन द मशीनरी ऑफ से टू द एक्सटेंट ऑफ 4 lakh rupees, but at present the value is just 1 lakh. Now this is also over evaluated in your assets. This is also over evaluated in the assets, which doesn't make sense. Secondly, we have undervaluation of the liabilities. Undervaluation of liabilities, right? These 2 points get accumulated. होते फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाता है. इन दोनों को मेकओवर करने के लिए वी हैव दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. बट आई वुड लाइक टू से दैट ओनली इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड यू, ओनली देन यू कैन इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी. अपनी मर्जी से नहीं कि चलो आज सुबह उठे हैं तो चलो अब हमको लॉस हो रहे हैं, हम लोग ये कर लेते हैं. नो 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 नो. इवन द कंपनीज एक्ट provide the provision for this. There are rules and regulations by which you can or you cannot do that. Now we come with another term here, capital reduction account. Capital reduction account is created for sure when the company is internally reconstructed. Another thing is the sacrifice. Whose sacrifice? It is the sacrifice of the shareholders, of the debenture holders and the creditors, which these three people are ready to go. Forgo the amount which they have given it to you. थोड़ा सा sacrifice ये करेंगे और तभी हम अपनी कंपनी को reconstruct कर सकेंगे. The amount which these 3 people will sacrifice, that amount will be used to write off the losses. जो अब इतने सारे लॉस इकट्ठे कर दिए वो कहाँ से जाएंगे? वो राइट ऑफ होंगे इनके सैक्रिफाइस के साथ. अनदर पॉइंट, हम कोई नई कंपनी नहीं बना रहे कि भाई ये कंपनी लॉस में थी तो चलो अब नहीं बना लेते हैं, फिर वो लॉस में जाएगी नहीं बना लेते हैं. नो 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 नो. नो
new company is being formed in this whole process. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के बाद जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सो एज ऑन सो एंड दे विल बी रिटन एंड reduced word itself symbolizes that you have internally restructured your company. For this whole process, the court approval is must. You have to oblige all the articles of association, whatever written is in the Companies Act. So we come across that this is the complete overhauling of the financial position. This is the complete overhaul. जैसे हम अपनी मशीन को ओवरहॉल करवाते हैं, वैसे ही हम कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ आवर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. इससे फ़ायदा क्या रहेगा? इट इम्प्रूव्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी. जैसे डूबती नैया को हमने बचा लिया, उसी तरह से हमने अपनी इस कंपनी में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव कर ली. एंड इट रिलीव्स द कंपनी फ्रॉम ऑल द डेट्स एंड द लॉसेस, नो डाउट, विद द नेगोशिएशन विद द क्रेडिटर्स, विद द शेयर होल्डर्स एंड द डिबेंचर होल्डर्स. Right? So this is internal reconstruction. We will be solving a question in this regard. You'll come to know about the journal entries as well. This is the balance sheet of a private company which shows that there are 19,000 shares of 100 each. There are some creditors of 1 lakh, debentures are of 1 lakh. And then there is the land and building to the extent of 1 lakh, machinery, furniture, stock, debtors, goodwill and PL 9,70,000. So this is the tallied balance sheet. Now under the reconstruction, what we will be doing is shares of rupees 100 are to be reduced to an equal number of fully paid shares of rupees 40 each. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 19,000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ के, इसको हमने रिड्यूस करना है 40 रुपीज़ का. तो जब हम पुराने शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल will be debited to new equity share capital. Now what we have is 19,000 shares of rupees 100 each. So this will be 19,000 shares of rupees 100 each. This will give you 19 lakh rupees. अभी जो नया इशू करना है वो है 40 रुपीज़ का एक शेयर. So this will be 19,000 shares into 40 rupees. So this is giving you 7,60,000 rupees. आपने क्या किया? आपने पुराना शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिया और उसको नए शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया. पुराना शेयर कैपिटल एक शेयर था 100 रुपीज़ का, नया शेयर कैपिटल एक शेयर है 40 रुपीज़ का. अभी हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो जैसे हमने बताया वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर आई मीन 19 लाख माइनस 7,60,000. सो दिस कम्स आउट टू बी 11,40,000 rupees. This goes your first entry. Secondly, they say that to issue 1,000 new shares of rupees 40 each as fully paid to debenture holders in full settlement. So debentures हैं आपके कितने के? 1 लाख रुपीज़ के. आप इसको ख़त्म करेंगे, इसके बदले में इनको शेयर्स दे देंगे. So debentures will be debited ताकि इसका अकाउंट नल हो जाए. डिबेंचर्स हैं आपके 1 लाख रुपीज़ के, इनको आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो दिस ईच शेयर बीइंग ऑफ अगेन 40 रुपीज़ का एक शेयर आप इनको देंगे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 40. सो दिस विल बी गिविंग 40,000 रुपीज़. बैलेंस अगेन इट विल बी गोइंग टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जब भी हम ये वाली एंट्रीज करेंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही जाएगा. ये भी आपने क्या किया? डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया, उनका अकाउंट बंद कर दिया, उसके बदले में उनको 40,000 के शेयर्स दे दिए और 60,000 रुपीज़ आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ गया. यहाँ पर भी आया था 1140, यहाँ पर भी आ गया 60,000 रुपीज़. अब हम देखें कि 1140 प्लस 60 ये बना आपका 12 लाख रुपीज़. इस 12 लाख रुपीज़ से अब आप क्या करेंगे? हियर इट गोज़ दैट द अमाउंट अवेलेबल इज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल. ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड जो अभी हमने क्रिएट किया है which is of the value of 12 lakh rupees. Writing of the goodwill. Okay, goodwill is of 2 lakh rupees. So to goodwill it will go for 2 lakh rupees. And of course to write off the P&L account. P&L account shows 9,70,000 rupees. ये भी कर दीजिए. To P&L account 9,70,000 rupees.
बाकी का राइट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू मशीनरी. So how much will be, again this will be the balancing figure. The total is 12 lakh and you have to reduce 11 lakh 70,000. So this give you 30,000 rupees जो आपने मशीनरी को राइट ऑफ कर दिया. सो जस्ट टू सम अप, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करके नया इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया था, बाकी का बैलेंस आपने डाला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. डिबेंचर्स क्लोज करके उनको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया, बाकी का बैलेंस डाला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. जितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का टोटल होता है उसको यूज़ करना है. द क्वेश्चन इज मेंशनिंग कहाँ कहाँ यूज़ करना है. गुडविल राइट ऑफ कर दीजिए, P&L अकाउंट राइट ऑफ कर दीजिए, और बाकी का जो बला हुआ बैलेंस है, ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा तो यूज़ ही नहीं कर सकते ना. 12 लाख आपकी मैक्सिमम लिमिट है जो आपने यहाँ पर क्रिएट करी. बाकी का बैलेंस बचा 30,000 रुपीज़ जिससे आपने मशीनरी की वैल्यू राइट ऑफ कर दी. सो दिस गोज़ योर एंट्रीज. दिस इज़ हाउ यू विल डू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन.